Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jay, this is Dr. Adil Irfan, and today we are going to study about the second part of our goal number 2, world politics. Basically, what actually we have studied in our previous lecture is power politics, realism, distribution of power at international stage, and balance of power, and so on. Let me share the screen with you guys, then we will continue our second part. Okay. What was power politics? So basically, let me give you a brief overlook of our previous part. First part, uh, we have studied about the introduction, why the knowledge is required, and why we apply theory in contemporary scenario, in contemporary discourse. Basically, knowledge क्या है, किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, and we have studied about different theories. I mean, not different theory, but about realism. But लेकिन हमें idea हुआ कि basically international relation में there's so many theories which we can apply, which we can relate with the contemporary scenario. Realism, neo-realism, offensive realism. Neo-realism क्या है basically, and offensive. Basically जो offensive realism है और neo-realism ये basically एक दूसरे के contrary. Neo-realism, we can call it defensive realism as well. And liberalism, neo-liberalism, constructivism, Marxism, feminism, इनकी डिटेल खैर मैं अभी आपसे नहीं डिस्कस कर रहा. ये जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस वक्त डिस्कस करेंगे. अभी हम जो गोल 2 है उस पर स्ट्रिक करेंगे. रियलिज्म क्या होता है? पावर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, अनार्की प्रिवेल करती है. That is inevitable in international relation, obviously. जो clash of interest है उसकी जंग है. Then core assumptions of international relation in which there is no role of morality, और जो international relation होते हैं वो एक purely interest based होते हैं. Then we have studied about idealism in which we apply different functionalist approach. International organizations क्या होती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, उनका रोल क्या होता है, ठीक है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, दैट्स ऑल अबाउट. ठीक है. आइडियलिस्ट जो सोसाइटी थी, आइडियलिज्म कब प्रोपिगेट हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, और देन कैसे फेल हो गई और जिसके नतीजे में वर्ल्ड वॉर 2 सामने आई, बिकॉज लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी आइडियलिस्ट ग्रुप ऑफ स्कूल ऑफ थॉट ने. एंड देन फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 उसके नतीजे में हमें देखने में मिले. Then we have studied the realist approach from different perspective, different school of thought, Chinese school of thought, then Greece mythology जो थी ancient time में, Peloponnesian War, उसमें जो एथेंस और स्पार्टा का क्या रोल था वो हमने स्टडी किया था. थॉमस हॉब्स, गंथाओ, इनका पावर स्ट्रक्चर, रियलिस्ट अप्रोच जो थी. देन पावर का क्या रोल है इंटरनेशनल रिलेशन में, और किस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो डेवलप किया जाता है. इंडिकेटर्स क्या है पावर के, कि एक मुल्क की जो निशानदही किन किन इंडिकेटर पे होती है, जीडीपी रेट, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन. दैट्स ऑल वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस पार्ट. बेसिकली जो हमारा पार्ट 1 है जो कि हमने स्टडी किया था, एंड वो बेसिकली बेस करता था, let me share with you guys this one. So goal 1 में, goal 2 में हमने realism and power and elements of power को स्टडी किया था. 2 objectives, and now the remaining 5 objectives we will study in today's lecture. International system, balance of power, great powers and middle powers, hegemony, and the great power system. ये जो 5 goals हैं ये अब हम इसमें स्टडी करेंगे. Okay,
सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम होता क्या है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड बताऊं तो इंटरनेशनल सिस्टम एस्टैब्लिश होता है डिफरेंट, जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे डिफरेंट पावर्स होती हैं। उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग पावर्स होती हैं, कुछ मिडल पावर्स होती हैं, कुछ वीक पावर्स होती हैं। डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, उन सब के आपस के मिलने से इंटरनेशनल सिस्टम बनता है। अब इंटरनेशनल ये जो गोल है, ये सारा पावर पे है, सिक्योरिटी डायलेमा पे है, हेजिमनी पे है। आपको इससे नजर आ रहा होगा बेसिकली कि किस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो डेवलप होता है, किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होती है, और जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं वो अपना रोल परफॉर्म करती हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। तो बेसिकली तो कहते हैं स्टेट्स इंटरेक्ट विद अ सेट ऑफ लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ द गेम governing what is considered a state and how states treat each other. Basically, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड रूल क्या है गेम के? देखें, हम जब भी वो कहते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म करते हैं, एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जाती है, तो देर आर सर्टेन रूल्स जिस पे एक गवर्नमेंट बनाई जाती है, जिस पे वो परफॉर्म करती है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को वॉयलेट करेंगे तो आप पे चेक एंड बैलेंस है, आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, बट इंटरनेशनल लेवल पे वो कहते हैं कि देर इज नो चेक एंड बैलेंस। वो कहते हैं अनार्की प्रीवेल करती है इंटरनेशनल सिस्टम पे। और यही वजह है, जब अनार्की प्रीवेल करती है तो हम उस अनार्की को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं कि अलायंसेस बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं डिफरेंट स्टेट में, इसी वजह से होता है कि देर आई मीन द स्टेट्स वांट टू एस्टैब्लिश सर्टेन रूल्स which should be followed. वो कहते हैं टुगेदर दीज रूल्स शेप द इंटरनेशनल सिस्टम। अब अनार्की एंड सोवरेनिटी की बात करते हैं, जो कि बेसिकली सॉवरन किससे अटैच होता है? आई मीन सुप्रीम पावर अटैच होती है आपकी स्टेट से। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से या इंटरनेशनल बॉडी से अटैच नहीं है, वो आपकी स्टेट के साथ अटैच है। ठीक है, अब होता क्या है कि उस जो आई मीन जो स्टेट की सोवरेनिटी है, उसको अगर आप डिम करें, देयर आर डिफरेंट स्टेट्स they join together, collaborate together, and they form international organization. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप सॉवरेनिटी अटैच नहीं करते, लेकिन उसके जो रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस को, आई मीन उसके जो लॉज को फॉलो किया जा सकता है, किया जाता है। जैसे यूरोपियन यूनियन है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस पे अगर आपको ब्रीफ करूं, ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम कहते हैं, यूरोपियन यूनियन है या सार्क है, ओआईसी है, ये बनाई जाती है नियो फंक्शनलिस्ट अप्रोच की बेस पे। नियो फंक्शनल आप को अगर डिफरेंशिएट करें आप फंक्शनलिस्ट और नियो फंक्शनलिस्ट को, फंक्शनलिस्ट होती है जो कि ग्लोबल इंटीग्रेशन की बेस पे बनाई जाती है, और नियो फंक्शनलिस्ट वो होती है जो कि रीजनल इंटीग्रेशन की बुनियाद पे बनाई जाती है। यानी कि रीजनल इंटीग्रेशन, आई मीन दे कैन ज्वाइन टुगेदर, और जो वो लॉज सेट करते हैं या जो पैरामीटर सेट करते हैं, तमाम जो स्टेट्स उनको फॉलो करते हैं। एक किस्म के उनको यू कैन से एक डमी सोवरेनिटी उनको दी जाती है, और उसके लॉज को, जैसे यूरोपियन यूनियन में, जो यूरोपियन यूनियन तमाम यूरोप में वो उसको फॉलो किया जाता है उसके मेंबर कंट्रीज में। अच्छा, कमिंग बैक टू द अनार्की एंड सोवरेनिटी, realists believed that the international system exists in a state of anarchy, which we already studied, a term that implies not complete chaos or absence of structure and rule, but rather the lack of central government that can enforce rules. Realists believe that there is no central government at international level जो कि रूल्स को, लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवा सके। Now they are giving the example of domestic societies where states and head of the state who is responsible to enforce different laws in domestic society within states. Government can enforce contracts, deter citizens from breaking rules,
and use their monopoly on legally sanctioned violence to enforce a system of law. Both democracies and dictatorship provide central government enforcement of a system of rule. Realists contend that no such central authority exists to enforce rules and ensure compliance with norms of conduct. They believe that जो domestic level पे law and order situation हम maintain करते हैं, हम international level पे maintain नहीं कर सकते because we don't have any central authority. So this makes collective good problem. If we were studying about business dilemma, basically होता क्या है कि interest की game चलना शुरू हो जाती है, अपने अपने interest, especially acute in international relation. The power of one state is countered only by the power of other states. आप उसको थ्रू फोर्स, थ्रू काइनेटिक ऑपरेशन, उसी के जरिए वो कहते हैं कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप उसको अपनी हेजेमनी शो करके, जो हेजेमोन स्टेट्स होती हैं. States must therefore rely on self-help, which they supplement with allies and the sometimes constraining power of international norms. जो स्टेट होती है वो जनाब क्या करती है, हमने पढ़ा कि जो पावर के जरिए वो दूसरे स्टेट की पावर को काउंटर करते हैं. इस वजह से स्टेट्स को अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करना चाहिए, सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिलायंस, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करना चाहिए सर्वाइवल के लिए. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, बट एक्चुअली इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज है ये नियो रियलिस्ट अप्रोच है, जिसको हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल रियलिज्म. ये डिफरेंट आपने होता क्या है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, आप अलायंस बनाते हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर डिफेंस, अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज बेसिकली यही है, जो चीजें आपके पास नहीं है, जहां पे आप लैक करते हैं, जो रिसोर्सेज की कमी है, वो आप एक्वायर करते हैं, कैपेबिलिटीज एक्वायर करते हैं. Some people think that only a world government can solve this problem. कि एक बुनियादी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, वही जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. अदर्स थिंक दैट एडिक्वेट ऑर्डर शॉर्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट में नहीं है, कैन बी प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट. ये जो ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीमेंट, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, ये ऑर्डर प्रोवाइड कर सकते हैं, एक स्मूथ, एक स्ट्रेंथन इन ऑर्डर को कर सकते हैं, पीस क्रिएट कर सकते हैं. But most realists think that IR cannot be escaped from a state of anarchy and will continue to be dangerous as a result. जो अनार्की है ये इनएविटेबल है, इसको आप नहीं रोक सकते. और वो कहते हैं, in this anarchic world, realists emphasize prudence as a great virtue in foreign policy. The state should pay attention not to the attention of other states, but rather to their capabilities, to improve their capabilities. Despite its anarchy, the international system is far from chaotic. The great majority of state interactions closely adhere to norms of behavior, shared expectations about what behavior is considered proper. Norms change over time slowly, but the most basic norms of the international system have changed little in recent centuries. Now, what they are talking about? They are talking about your capacity, your capabilities. Again, if I will give you an example, I think you will get a better idea. एक मोबाइल फोन कंपनी है, लाइक सपोज वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ नोकिया. नोकिया की एक कंपनी है जो कि पिछले 10 साल पहले अगर आप चले जाएं तो हम सैमसंग से ऊपर शायद उसको रेट करते. लेकिन और जब ये टच मोबाइल और जनाब एंड्रॉयड फोन्स आए तो हुआ क्या क्या जनाब, नोकिया ने अपने आप को विद चेंजिंग एनवायरनमेंट उसने अपने आप को इक्विप नहीं किया और ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पीछे रह गए. और यही चीज है, जो कौमें, जो स्टेट्स अपने आप अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव नहीं करती तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सटिंक्ट कर जाती हैं. एक्सटिंक्ट से मुराद ये है मेरा कि वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं, पीछे रह जाती हैं, डेवलप से डेवलपिंग में आ जाती हैं. Sovereignty. Traditionally, the most important norm means that
A government has the right in principle to do whatever it wants it in its own territory. कि क्योंकि एक स्टेट एक सॉवरेन स्टेट होती है, इसलिए जो स्टेट है उसके अंदर जो कुछ होता है, सियासत जो मर्जी हो, आई मीन जो कुछ भी हो, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टेट जो चाहे कर सकती है। सॉवरेनिटी का मतलब ही यही है, देयर इज नो इंटरफेरेंस। वो अपने अंदरूनी मामलात में सब कुछ करने की आजाद होती है, एज फार एज दे आर नॉट वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली सॉवरेन होती है। अब वो कहते हैं कि लैक ऑफ वर्ल्ड पुलिस, यानी कि वर्ल्ड पुलिस क्या है कि एक सिक्योरिटी फोर्स होनी चाहिए जो कि सेंट्रल लेवल पे होनी चाहिए, जो कि ऑर्डर क्रिएट करे। और जब वो नहीं है, ऑर्डर क्रिएट नहीं होता, तो उसके नतीजे में होता क्या है? उन्होंने एग्जांपल दिया नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया, जब नॉर्थ कोरिया का नाम आता है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का नाम आता है। तो कहते हैं द लैक ऑफ वर्ल्ड पुलिस टू पनिश स्टेट्स इफ दे ब्रेक एन एग्रीमेंट मेक्स enforcement of international agreement difficult. नहीं है वर्ल्ड पुलिस स्टेट्स को पनिश करने के लिए if they break an agreement or violate some kind of agreement at international level, then obviously it is difficult to stop, to to mark a full stop against that particular state. For example, in the 1990s, North Korea announced it would no longer allow inspection of its nuclear facilities by the state. उसने भाई से सीधा इनकार कर दिया कि वो अब जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल है उसकी इंस्पेक्शन नहीं करने देगा, जो कि सीधा सीधा एनपीटी की वायलेशन थी। सो द इंटरनेशनल कम्युनिटी यूज्ड अ मिक्स ऑफ पॉजिटिव इंसेंटिव्स एंड थ्रेट, यानी कि उसने रेसिप्रोसिटी का जो एक प्रोसीजर था वो अडॉप्ट किया और उसे परसुएट करने की कोशिश की कि नॉर्थ कोरिया टू स्टॉप प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर मटेरियल। बट इन 2002 नॉर्थ कोरिया उसने जनाब का मैं एनपीटी का मेंबर ही नहीं हूँ, कर लो जो करना, एंड बिल्ड perhaps half dozen nuclear bombs, one of which exploded in 2006, the world's first nuclear test in attack it. And after reaching an agreement, 2008 में उनका अमेरिका के साथ यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ। देन वो एग्रीमेंट भी उसका कुछ शराइत पे था और उसने कहा था कि मैं अपने कुछ जगहों को इंस्पेक्शन की इजाजत नहीं दूंगा, बिकॉज उसने सॉवरेनिटी का सहारा लिया। उसने कहा ये एक सॉवरेन बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम के अगेंस्ट है, तो इसलिए आई विल नॉट अलाउ यू टू इंस्पेक्ट सर्टेन एरियाज। अच्छा जी, फिर होता क्या है कि सिक्योरिटी डायलेमा पैदा होता है इंटरनेशनल स्टेज पे। जब रियलिस्ट अप्रोच होती है, पावर बेस्ड अप्रोच होती है, तो सिक्योरिटी डायलेमा तो आएगा। So diplomatic norms recognize that states try to spy on each other. एक दूसरे पे नजर रखते हैं, एक दूसरे की जासूसी करते हैं, और वो कहता है कि ये सिर्फ आई मीन वो स्टेट्स नहीं जिनके दरमियान में कोई कोई एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप होते हैं, या फिर एक दूसरे जो दे वर नॉट लिविंग कॉर्डियली। ऐसा नहीं है कि जो दुश्मन स्टेट होती है, दोस्तों में भी आपस में वो होता है कि स्पाई एक दूसरे पे नजर रखते हैं। और ये कहते हैं कि एक मॉडर्न जो टाइम पीरियड है उसमें एक हैबिचुअल, एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। ईच स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अदर स्टेट फ्रॉम स्पाइंग ऑन इट। इन 2002 चाइना के एग्जांपल दिए। चाइना का जब एयरक्राफ्ट जब यूएस टेक्सास गया था, वो कहता है डिस्कवर दैट इट्स न्यू प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट बोइंग 767 refurbished in Texas was riddled। क्या किया है उसको इंस्पेक्ट किया गया with sophisticated listening devices, but China did not make an issue of it। The plane had not gone, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहां पे नेक्स्ट मंथ सबमिट होना था यूएस चाइना को, और वो उसी तरीके से हुआ। उन्होंने कोई उसमें कोई इशू नहीं क्रिएट किया, and US China summit the next one went forward। In the post Cold War era, spying continues even between friendly states, and realists acknowledge that the rules of IR often create a security dilemma। जब इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिव कमोडिटी आता है, प्रिजनर्स डायलेमा आता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है, जब पावर अनार्की की बात की जाती है, और जब लैक ऑफ इंटरनेशनल फोर्स की बात होती है, तो सिक्योरिटी डायलेमा तो आएगा।
a situation in which states' actions taken to ensure their own security, such as deploying more military forces, threaten the security of other states. Obviously, sure, आप अपनी एक तरफ अपना डिफेंस बढ़ाएंगे तो आपके इर्द गिर्द तो लोगों में कंसर्न पैदा होंगे. So the responses of those other states like deploying more, excuse me. So a situation in which states' actions taken to ensure their own security, such as deploying more military forces, threaten the security of other states. The responses of those other states, such as deploying more of their own military forces, in turn threaten the first state. And the dilemma is a prime cause of armed races in which states spend large sum of money on mutually threatening weapons that do not ultimately provide security. और होता क्या है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इन ऑर्डर टू क्रिएट पीस, वो जो आपकी एक इंटेंशन थी वो बहुत पीछे रह जाती है, और जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा most of the state they spend a huge sum of money in order to improve their defense, in order to make their security more better. Okay, here come on the balance of power. सो जब सिक्योरिटी डायलेमा आपके पैदा होता है इंटरनेशनल लेवल पे, देन इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ पावर. और वो बैलेंस ऑफ पावर किस तरीके से क्रिएट होगा? द टर्म बैलेंस ऑफ पावर रेफर्स टू द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वन आर मोर स्टेट्स पावर बीइंग यूज्ड टू बैलेंस. आप या तो उसमें अलायंस बनाएंगे, या फिर आप कोई एग्रीमेंट्स करेंगे, और किसी भी तरीके से आप ब्लॉक्स बनाएंगे. So one or more states' power being used to balance that of another state or group of states. If you take the example of South Asia, we already know that China, Pakistan, Iran, or Russia, and on the other side, India, US, Israel. So इस तरीके से ये कि जो बैलेंस ऑफ पावर ये इसी तरीके से बनता है कि आप मुख्तलिफ स्टेट एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और इससे वो जो रीजनल एक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होने से रोकती हैं. The balance of power can refer to any ratio of power capabilities between states or alliances, or it can mean only a relatively equal ratio. Alternatively, balance of power can refer to the process by which counterbalancing coalitions have repeatedly formed in history to prevent one state from conquering an entire region. देखिए, जब बैलेंस ऑफ पावर होता है तो उसको काउंटर बैलेंस के लिए भी ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, और देन उसको फिर ओवरकम करने के लिए और ब्लॉक्स बनते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि जो सुपर पावर्स है उनको रोका जाए, उनको इंपीरियलिस्ट उनकी जो उनका एटीट्यूड है उसको स्टॉप किया जाए. तो होता क्या है, बैलेंस ऑफ पावर के लिए देन अलायंसेस बनाए जाते हैं. अलायंसेस एट इंटरनेशनल लेवल. Alliances to be discussed shortly play a key role in the balance of power, building up one's
Okay, excuse me. So alliances at international level, we were talking about why group make alliance. Alliance to be discussed shortly play a key role. बेसिकली हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अलायंस होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैलेंस ऑफ पावर में. बिल्डिंग अप वंस ओन कैपेबिलिटीज against a rival is a form of power balancing. Forming an alliance against a threatening state is often quicker, cheaper, more effective. ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है अगर जो स्टेट्स वीकर स्टेट्स हैं, जहां पे पावर जिनका डिफेंस वीक है, उनको अलायंसेस सपोर्ट मिलती है. In the Cold War, the United States encircled the Soviet Union with military and political alliance to prevent Soviet territorial expansion. Sometimes a particular state deliberately becomes a balancer in its region of the world, shifting its support to oppose whatever state or alliance is strongest at the moment. And similarly, Britain played this role on the European continent for centuries, and China played it in the Cold War. So ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्टेट्स अलायंस बनाकर अपना आपको अपना जो डिफेंस स्ट्रॉन्ग करते काउंटर करती हैं. पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. In the post-Cold War era of United States dominance, balance of power theory would predict closer relations among Russia, China, and even Europe to balance United States power. And indeed, Russian-Chinese relation improved dramatically in such areas as arms trade and demilitarization of the border. Similarly, French leaders have even criticized US hyperpower. But in recent years, with United States power seemingly stretched thin in Afghanistan and Iraq, and its economy also weak, and Chinese power on the rise, more countries. तो जो मोस्टली होता क्या है कि जो जैसे एक दुनिया यूनिपोलर होती है या बाइपोलर होता है या मल्टीपोलर होता है, तो होता क्या है कि बेसिकली जो अलायंस बनाए जाते हैं वो तो समझ आ गई कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जनाब एक स्टेट्स की हेजीमनी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे हेजीमनी स्टेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे कि हेजीमनी को स्टेबल कैसे किया जाता है, उसको काउंटर कैसे किया जाता है ये जब एक दूसरी स्टेट्स की पावर इंक्रीज हो रही है. तो वो कहते हैं इन 2012 and 2013 जापान स्ट्रक military agreements with former enemies South Korea and the Philippines and reaffirmed its United States US ties in response to China's growing power. उन्होंने अपने आप को चाइना को जो एक बैलेंस ऑफ पावर जो ईस्ट एशिया में डिस्टर्ब हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने अलायंस बनाया. नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्रेट पावर एंड मिडिल पावर. Okay, excuse me. So we were talking about basically power in post-Cold War era, balance of power. So now we will move on to great power and middle power. Basically, great power कौन सी होती है, middle power कौन सी होती है. As from the name, it is clearly seen that the great power, which have, hegemony over majority of the world resources. The most powerful states in the world exert most of the influence on international events and therefore get the most attention from higher scholars. By almost any measure of power, a handful of states, there are certain states, there are few states who possess the majority of the world's power resources. At most, a few dozen states have any real influence beyond their immediate locality. And these are called the great powers and middle powers in the international system. जो होता क्या है बेसिकली,
जो ग्रेट पावर्स और मिडिल पावर्स हैं वो बहुत थोड़ी हैं, और वो जो वर्ल्ड के ज्यादातर रिसोर्सेज पे उनका कब्जा है, और वो एक्सरसाइज करती हैं बेसिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स को. So the great power generally have the world's strongest military forces and the strongest economies to pay for them, and other power capabilities. So these large economies in turn rest on some combination of large population, plentiful natural resources, advanced technology, and educated labor forces. So because power is based on these underlying resources, membership is the greatest in the great power system changes slowly. Only rarely does a great power, even one defeated in a massive war, lose its status as a great power, because its size and long-term economic potential change slowly. Basically, जिस तरीके से over previous centuries we have seen कि जो great power का जो concept है और जो states है वो change होती है. हमने फ्रांस को देखा, हमने ग्रेट ब्रिटेन को देखा, हमने यूएस को देखा जो कि करंट पीरियड में, एंड नाउ इट इज स्लोली चेंजिंग डे बाय डे, एंड चाइना इज एन एमर्जिंग पावर. सो वो बता रहे हैं कि जैसे thus Germany and Japan decimated in World War II are powerful today. वो जब बिल्कुल क्रैश हो गई थी अब पावरफुल है. रशिया आफ्टर गेनिंग and then losing the rest of the Soviet Union is still considered as a great power. So what states are great powers today and how? Although definitions vary, 7 states appear to meet the criteria: US, China, Russia, Japan, Germany, France, and Britain. Together, they account for more than half of the world's total GDP and two-thirds of its military spending. So they include the 5 permanent members of the UN Security Council, which are also the member of the club openly possessing large nuclear weapon arsenal. देखिए, उनको बेसिकली ग्रेट पावर्स का मतलब यही है कि हेजिमोनी है. I mean, there is nobody, no states who can raise question जो कि उन पे उनको पॉइंट आउट किया जाए, उनकी तरफ फिंगर की जाए. Notable on this list are the United States and China. The US is considered the world's only superpower because of its historical role of world leadership, especially in and after World War II, and its predominant military might. China has the world's largest population, rapid economic growth, 8 to 10% annually over the last 30 years, and a large and modernizing military, including a credible nuclear arsenal. Indeed, in 2008, the US National Intelligence Council's long-range planning report noted that China is poised to have a profound effect on the world over the upcoming period. चाइना जो है वो भी एक ग्रेट पावर के तौर पर emerge कर रहा है, और that may surpass the United States as well. Middle powers कौन से, जो कि somehow एक स्टेप नीचे होती हैं ग्रेट पावर्स. Middle powers rank somewhat below the great powers in terms of their influence on world affairs. Some are large but not highly industrialized. Others have specialized capabilities but are small. Some aspire to regional dominance and may have considerable influence in their region. A list of middle power, not everyone would agree on it, might include mid-sized countries of the global north, such as Canada, Italy, Spain, Netherlands, Poland, Ukraine, South Korea, Australia. It could also include large or influential countries in the global south, such as India, Indonesia, Brazil, Argentina, Mexico, Nigeria, South Africa, Israel, Turkey, Iran, and Pakistan. Middle powers have not received as much attention in IR as have great powers. Power distribution. Power distribution किस तरीके से होती है? बेसिकली जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज पढ़ा था, मैंने आपको उसमें बताया था कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म की बेस पे जो नियो रियलिज्म, बेसिकली ये केनेथ वॉल्स ने कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रक्चरल रियलिज्म का,
with each state's power balanced by other states. The most important characteristic of the international system, in the view of some realists, is the distribution of power among states. Power distribution as a concept can apply to all the states in the world or just the state in one region. But most often it refers to the great power system. किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है? वो कहता है कि हर जगह होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट्स में हो, रीजन में हो या ग्लोबल लेवल पे. Neo-realism, sometimes called structural realism, is a 1990s adaptation of realism. And it explains pattern of international events, distribution of capabilities होते हैं, distribution of jobs होती हैं, जिसकी बेस पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है. मिसाल के तौर पर एक मुल्क टेक्नोलॉजी में आ गया, एक इंडस्ट्री में आ गया, एक एग्रीकल्चर में आ गया, इस तरीके. It explains pattern of international events in terms of the system structure, the international distribution of power, rather than in terms of the internal makeup of individual states. थोड़ा सा नियो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया. क्या होता है सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल? सिस्टमैटिक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जॉब डिस्ट्रीब्यूशन होती है. Kenneth Wall's definition of a system क्या थी? A system is composed of a structure and of interacting units. और वो इंटरेक्टिंग यूनिट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर को बेसिकली उसको सप्लीमेंट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट सिस्टम होता है. इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? द सिस्टम्स ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. ठीक है. द डिग्री ऑफ फंक्शनल डिफरेंस. सिस्टम क्या होता है? ऑर्डर करता है कि जनाब तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा. देन डिफरेंट बॉडी के, जैसे बॉडी है उसमें हार्ट है, माइंड है, वो जनाब जो मैसेज देता है. देन डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और हर ऑर्गन का डिफरेंट काम है, वो डिफरेंट. कोई जनाब हमारा हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, कोई किसी चीज को कंट्रोल करता है. आई मीन कोई जनाब खून में खून में जो हेमोग्लोबिन, जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है उसको उसको मेंटेन रखता है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज अक्रॉस यूनिट इसी तरीके से कहते हैं स्टेट लेवल पे होते हैं. डिफरेंट फंक्शन है स्टेट के, डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं, और उसकी बेस पर द सिस्टम ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, हाउ द यूनिट ऑफ अ सिस्टम आर अरेंज्ड. डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हिरार्किकली ऑर्डर, हिरार्किकली ऑर्डर्ड इसलिए कहा क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हर एक का काम है. पता है जनाब प्रोविंशियल जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें जो इदारों का क्या क्या काम है. बट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वहाँ अनार्किकली ऑर्डर, उसमें अनार्की है और वहां पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं. नो पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम. वो जनाब कहते हैं कि बेसिकली पावर को इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. एक तो पावर ट्रांजिशन थ्योरी है. वो कहते हैं बेसिकली 3 तरह की जनाब पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिपोलर, जहाँ पे एक हेजेमोन होगा, बाइपोलर 2 होंगे, मल्टीपोलर 3 होंगे. वो कहते हैं मल्टीपोलर जो है ना वो यूजुअली रेयर होते हैं. यहाँ हमें यूनिपोलर नजर आते हैं, बाइपोलर नजर आते हैं. पावर ट्रांजिशन थ्योरी, पावर ट्रांजिशन यही है जब पावर को पावर ट्रांजिशन फेज में हो, यानी कि यूनिपोलर है, यूनिपोलर से बाइपोलर की तरफ जा रही हो दुनिया, जो बेसिकली चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है. सो पावर ट्रांजिशन थ्योरी holds that the largest war result from challenges to the top position in the status hierarchy when a rising power is surpassing. देखिए जब एक पावरफुल स्टेट को उसको अपना आप नीचे जाते हुए दिखेगा तो वो कहते हैं कि वो उसके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी और दैट क्रिएट फ्रस्ट्रेशन, और वो कॉन्फ्लिक्ट को जनरेट करेगी, कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनेगी. सो होता क्या है? एट सच टाइम पावर इज रिलेटिवली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं. दिस आर द मोस्ट डेंजरस टाइम फॉर मेजर वॉर्स. Status quo powers that are doing well under the old rule will try to maintain them, whereas challengers that feel locked out by the old rules may try to change them.
स्टेटस को जो होते हैं, एक तरफ वो होते हैं, दूसरी तरफ चैलेंजर्स होते हैं। वो चैलेंजर्स क्या होते हैं, उसको चेंज कर रहे होते हैं, और स्टेटस को, सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। If a challenger does not start a war to displace the tower, the later may provoke a preventive war to stop the rise of the challenger before it comes to becomes to a great threat. देखिए कहता है कि या तो अगर स्टेटस को नहीं स्टार्ट करेगा, आई मीन चैलेंजर जो चेंज कर रहा है एनवायरनमेंट को, अगर वो नहीं स्टार्ट करेगा तो स्टेटस को स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे पता है अल्टीमेटली उसने उसके ऊपर आ जाना है। और उस थ्रेट को, जो एक स्पिल ओवर है, जो एक फाइनल प्रोडक्ट है, जब वो फाइनल यानी कि डेस्टिनी पे पहुंच जाएगा तो वो थ्रेटनिंग हो जाएगा। जैसे कि यूएस चाइना का एक किस्म का एक सोसाइटी में आजकल की जो सिनेरियो है, चाइना एक डेवलपिंग नेशन है, और यूएस जो हर मुमकिन कोशिश करेगा उसकी पावर को, नेवल पावर को, उसकी इकोनॉमिक पावर को कंटेन करने की। ओके, देन मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, हेजीमनी। हेजीमनी क्या है, स्टेट हेजीमनी क्या होती है और किस तरीके से काम करती है, ये हम अभी ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ते भी हैं। हेजीमनी इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री प्रीडोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर द अदर स्टेट। इन एंशिएंट ग्रीस it is very much popular. Hegemony denoted the political military dominance of the hegemon city-state over other city-states. In the 19th century, hegemony denoted the social and cultural predominance or ascendancy predominance by one group within a society, a milieu, and a group or regime which exerts under influence within a society. ये बेसिकली उन्होंने हेजीमोनी को डिफाइन किया है कि आपके पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मिलिट्री डोमिनेंस होती है दूसरे सिटी पे, दूसरे स्टेट पे। 19th सेंचुरी में जो था, सोशल एंड कल्चरल डोमिनेंस होती थी। देन उसके बाद सोसाइटी में एक मिलिट्री डोमिनेंस, और उसने शक्ल इख्तियार कर ली। ये जो एंटोनियो ग्रामसी हैं, ये बेसिकली इसके रूहे रवां थे हेजीमोन, थ्योरी ऑफ हेजीमोन के। द इटालियन मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट एंटोनियो Gramsci used the term hegemony to refer to a complex of ideas that rulers use to gain consent for their legitimacy and keep subjects in line. जो rulers होते हैं, head of the states होते हैं, या जिनके साथ you can say hegemon attach किया जाता है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बेसिकली वो अपनी अपनी जो एटीट्यूड अप्रोच है उसको लीगलाइज करने के लिए वो कंसेंट का सहारा लेते हैं, टू टू मेक देयर इनिशिएटिव, टू मेक देयर अप्रोच लेजिटिमेट। जैसे यूनाइटेड स्टेट ने आफ्टर 9/11 सहारा लिया था और तमाम फोर्सेस को अपने साथ मिलाया जो स्टेट लेवल पे थी, और देन अटैक किया और अपने ऑर्डर को, अपने एक्ट को जस्टिफाई किया, reducing the need to use force to accomplish the same goal. By extension, such a meaning in IR refers to the hegemony of ideas such as democracy and capitalism, and to the global predominance of the US culture. So, okay, now most studies of hegemony point to two examples. एक तो जो यूएस की हेजेमनी और ब्रिटेन की, 19th सेंचुरी में ब्रिटेन का, and then 20th century में यूनाइटेड स्टेट्स में after World War II. Britain's predominance followed the defeat of its arch rival France in the Napoleon Wars. Both world trade and naval capabilities were firmly in British hands as Britannia ruled the waves. US predominance followed the defeat of Germany and Japan and the exhaustion of the Soviet Union, France, and Britain and China in the effort. Now, hegemonic stability theory, उसको stable आप कैसे करते हैं? Hegemonic stability theory क्या है? Holds that hegemony provides some order,
similar to a central government in the international system, reducing anarchy, deterring aggression, promoting free trade, providing a hard currency that can be used as a world standard. So hegemons can help to resolve or at least keep in check conflicts among middle powers or small states. When one state's power dominates the world, that state can enforce rule and norm unilaterally, avoiding the collective good problem. In particular, hegemons can maintain global free trade and promote world economic growth in this way. बेसिकली हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी होती ही इसलिए अप्लाई करते हैं कि जब जो डिफरेंट हेजिमोन्स होते हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, वो उस एग्रेशन को, उस अनार्की को, उसको रोकते हैं और फ्री ट्रेड करेंसी को प्रमोट करते हैं बेसिकली. नाउ द ग्रेट पावर सिस्टम. दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्टिव, ग्रेट पावर सिस्टम. ग्रेट पावर सिस्टम था क्या? ये हम अभी बेसिकली जो बात करते हैं वही तमाम बेसिकली इन्होंने बताया कि किस तरीके से डिफरेंट दौर में डिफरेंट पावर्स जो थी उनका दौर रहा था और उन्होंने किस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया था या किस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हुआ था. To illustrate how these concepts such as balance of power, power transition and hegemony have operated historically. हिस्ट्री में जो ये तमाम जितना जो जिस तरीके से पावरफुल स्टेट्स ने मेंटेन किया था, अपनी हेजिमनी को बरकरार रखा था. So we briefly review the origin of the modern international system. Noted कि किस तरीके से ये जो current modern international system है वो came into being, noted by the presence of great power, sovereignty, balance of power, and period of hegemony. The modern great power system is often dated from the Treaty of Westphalia 1648, which established the principles of independent sovereign state that continue to shape the international system today. जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से शुरू हुआ था, जब बेसिकली इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट एक बेसिकली रखा गया था. So a system of great power relation has existed since around 1500, and the structure and rules of that system have remained fairly stable through time. Although the particular members change, the structure is a balance of power among the six or so more powerful states which form and break alliance, fight war, make peace, letting no single state conquer the other. अगर हम हिस्ट्री को देखें तो वो हमें नजर आता है कि चंद एक स्टेट्स हैं जो के ऊपर नीचे होती रही हैं और उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट जनाब चलता रहा. The most powerful states in 16th century Europe were Britain, France, Austria, Hungary, and Spain. The Ottoman Empire recurrently fought with the European power, especially with Austria and Hungary. Today, the historic conflict between the Islamic Ottoman Empire and Christian Austria-Hungary is a source of ethnic conflict in the former Yugoslavia and the edge of the old Ottoman Empire. Then 18th century में वो कहते हैं the power of Britain increased as it because of industrialization and Britain's great rival was France. और फिर उन्होंने किस तरीके से फ्रांस को शिकस्त दी. Sweden, the Netherlands, and the Ottoman Empire all declined in power, but Russia and later Persia emerged as major players. In the Napoleonic Wars, which followed the French Revolution, France was defeated by a coalition of Britain, Netherlands, Austria, Hungary, Spain, Russia, and Persia. Then Congress of Vienna, 1815, ending that war, reasserted the principle of state sovereignty in reaction to the challenges of the French Revolution and Napoleon's empire. Collapse कर गई थी. Then check and balance के लिए उन्होंने जनाब जो state sovereignty को ensure करवाया, and the concept of Europe that dominated the following decades. The five most powerful states tried with some success to cooperate on major issues to prevent war. A possible precedent for today's United Nations Security Council. US Security Council की बुनियाद basically उस वक्त रखी गई थी. I mean जो उसके जो you can say उन्होंने एक बीज उस टाइम बोया था. तो ये बेसिकली ग्रेट पावर सिस्टम में बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न पावरफुल सिस्टम, मॉडर्न जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो है जो डेवलप हुआ पावर कॉन्सेप्ट ग्रेट पावर का, ये बेसिकली 16वीं सदी से इस तरीके से चलता आ रहा है कि कौन सी 16th सेंचुरी में कौन सी थी, 18th सेंचुरी में कौन सी थी, then 20th century में three new rising powers had appeared on the scene. US,
which had become the world's largest economy, Japan and Italy. The great power system became globalized instead of European. यूरोप से निकल चुका था और ग्लोबलाइज हो चुका था. So powerful states were industrializing, extending the scope of their world activity and the might of their military. After Prussia defeated Austria and France in wars, a larger Germany emerged to challenge Britain's position. In World War I, Germany, Austria-Hungary, and the Ottoman Empire were defeated by a coalition that included Britain, France, Russia, Italy, and the US. After 20 years, Germany, Italy, and Japan were defeated in World War II by a coalition of US, Britain, France, and Russia, and China. So after World War II, the US and the Soviet Union, Cold War started, which had been allies in the war against Germany, became adversaries for 40 years in the Cold War. Europe was split into rival blocs, East and West, with Germany split into two states. The rest of the world became contested terrain, where each bloc tried to gain ally or influence, often by sponsoring opposite side in regional and civil war. The end of the Cold War around 1990, when the Soviet Union collapsed, returned the international system to a more cooperative arrangement of the great power, somewhat similar to the concert of Europe in the 19th century. Basically, हुआ क्या, जो ग्रेट ब्रिटेन था एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, वो ऐसा ऐसा जनाब वर्ल्ड वॉर वन के बाद जनाब चेंज होता है. यूएस इमर्ज किया और यूएस वर्ल्ड वॉर टू से पहले और बाद में ड्यूरिंग कोल्ड वॉर यूएस इमर्ज होके ऊपर आता गया, और जो ब्लॉक से यूएस रशिया ब्लॉक से सोवियत यूनियन ब्लॉक थे वो चेंज होते गए. इसमें बेसिकली जो आप कह लें जो यूनिट्स है जो स्मॉल कंट्री से और डिफरेंट एडवर्सरीज में डिफरेंट रीजनल एंड इंटरनेशनल आई मीन सिविल वॉर्स में वो एक दूसरे का साथ देते. फिर जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ, सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, तो उसमें हुआ क्या कि जनाब उसकी पावर कम हो गई और देन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ एक कदम रखा गया, कोऑपरेटिव इंटरनेशनल सिस्टम की तरफ. यही वजह है कि जब 2000 का स्टार्ट था तो यूनाइटेड नेशन ने जो अगला 10 साल वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के लिए बेसिकली डेकेड ऑफ पीस का नाम दिया था. बट लेकिन जाहिर है कि 9/11 का इंसिडेंट हुआ एंड वो सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया. सो दिस इज हाउ द पावर पॉलिटिक्स वर्क. तो आप लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखनी कि हमने ग्रेट पावर सिस्टम पढ़ा. इससे पहले हमने ग्रेट पावर सिस्टम से पहले हेजिमोनी पढ़ा था, जिसमें हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी. हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी से पहले हमने पढ़ा था जो मिडल पावर्स एंड ग्रेट पावर्स एंड मिडल पावर्स. ठीक है, ग्रेट पावर्स कौन सी है, मिडल पावर्स कौन सी है, ठीक है, किस तरीके से ग्रेट पावर्स बनती हैं. उससे पहले हमारा जो था वो था बैलेंस ऑफ पावर किस तरीके से क्रिएट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा. एंड इनिशियली हमने स्टार्ट लिया था इंटरनेशनल सिस्टम से. ये बेसिकली दैट वाज ऑल फ्रॉम गोल नंबर 2. आई होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इसमें बेहतर तरीके से डेवलप हो जाएगी. मैंने थोड़ा सा डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिवली इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. कि hopefully we will have our next class in campus, so see you then. और अपनी जो presentations जो हैं जिनकी नेक्स्ट वीक में है और जो पाइल अप होती गई हैं वो नेक्स्ट वीक में अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके आएंगे. ठीक है, सी यू देन. अल्लाह हाफिज.